Hi traders. So today is 20th of August. We are recording this on a Sunday, and today we'll do a complete analysis of rupee dollar USDINR. So we'll look at both the technical as well as the fundamental part of it, and I'll give you complete analysis. You can take the trade for tomorrow as well as for the next week. So let's start with the basic one. If you look, first we'll go with the technical analysis. We look at weekly. So if you look at that, it has been in an uptrend. So rupee have been depreciating for as long as like you can see 2014, 2012. So it always go for depreciation. So on an average, it depreciates about 3 to 4% per year. So as you can see, as part of that, so from this time, which is you can see, I think from 99 or 8, so it's been like around a year. It has been hovering about this area, so it has finally broken up on a weekly candle, and it has finally broken out of this resistance area, and because of which we have turned bullish. And if we look at the lower time frame for technical, so this was the resistance area. This was for a resistance area for about 8 to 9 months. So finally this area has been broken, and it has gone up from there. So after resistance is broken, you turn to a buy side. So basically we are long for the entire week. If I take an intraday trade, mostly it will be for a long position, and for a weekly expiry you'll still be in a long position. So this is and if you go a little bit lower on it, so you can see, so this, let's go to 4 hour time frame. So if you look at the 4 hour time frame, same story here. The resistance was broken. But if you look at that, you can draw a trend line in here, and this trend line. So you can see that it has been supporting this trend line for a very long time, and also you can also draw kind of a channel pattern here. So mhm. Ideally, whenever you see a rising wage pattern, it is a chance of going down. But since this area has been broken and it has taken a support, because because this area which was the major resistance, this has been broken and it has kind of taken a support area. So this is a kind of a pullback of an up move. So we still consider this in an uptrend. Still not know whether this will break this wedge or go down, or if this resistance will take a precedence and it will touch here and then maybe rise up or not. I can also draw it for you guys. So if you look at a brush, I'm not sure that this will go here from upside, or it will consolidate for some day, or it will go down. So the probability of it going up is high as compared to down. I would say about 60-70% probability of upside, and then 30% might be wrong, but we still do have a stop loss which will be below this area, which will be below this resistance if it comes down. If it will flick us and then go up, still not sure. And if you go for a lower time frame, 1 hour, same story. uh, it has been consolidating in this area. So this has been hovering around in this area where, so after that it went up, then it retraced back. We still consider it as an up move. Not sure it will go up or down. Same, you can go for an even lower time frame for 15 minutes. You can see this area has been holding for quite a while. So this was a resistance area and then converted into support. So took support once, then twice, then thrice. Yeah, so traders, so you can also draw trend line here. Let me just change its color to, okay. So this is the first resistance level. So this is for a short term, maybe to 2 3 day. Then you have this area, which is another resistance level. Okay. Okay, so this is the another resistance level. So after this is broken, we will try to add more to our positions,
And currently I think we do have this area which is the third resistance level. Right. So if you go even in the lower time frame, you'll be able to see it better. Okay, so this is the next resistance level we have, which is 83.215. Once it go above that, we'll add more to our positions, and uh, below, so first level, after this we'll add more to our positions. If it goes above 324, we'll add more. And then if it goes above, then we'll keep on adding to our positions. So the logic is to keep on adding to your winners and cut your losers. Higher time frame, if it kind of blow, I think somewhere in here, this might be it. So if it, because I do mostly option selling, if it goes down straight below this level, I might be able to. It will hit my stop loss. So we'll see what will happen. So this is only for the chart side. Let's go and see what is happening in the different market. So traders. Okay, so these are all the things which I look for. So you can make your own watch list. So you can go to investing.com and create a watch list. So first I've added all the stock markets of the world. We'll start with our Nifty, then we have Hong Kong, Shanghai, Nikkei, London, German, and of course US based markets. After that, so looking at the stock market is really important, because if you don't look at that, because stock market is a very important component for the currency market, it affects like directly a lot of the currency markets, like inflows into stock markets or outflows in our case, and also in general, like what is the market sentiment, so it can tell you the flow of the currency. Then we also have to look at commodities. You look at major natural gas or Brent oil. Obviously, crude oil is a very important component for us. So, so let's talk about crude oil for a minute. We have Brent oil and crude oil WTI. So Brent oil has been up with $84. So this is a bad news for a country like India, because we do import most of our crude. So as long as this is at a very high level, so this is a very bad news. It has a tendency maybe to go a little bit up also. No, we're not sure. So we'll take a look at that. But uh, like it's been in a bull phase, so its prices still go up on a weekly basis. So that is a very negative news. As you can see from our stock market, it's been falling for quite some time. And then I look at gold, and then we look at various bond market. I look at 2 year yield, 10 year, and then US 2 year. Then you have dollar index, obviously, so you have to look at that to tell what is the sentiment for the dollar. Then you have various currency against USDINR, and you have various currencies again with the pair of US dollar. So if you look at INR, our currency has been doing relatively well. So against Canadian dollar and Japanese yen, and again from Great British pound and everything. So we have been holding quite a while for now. So okay, so first let's look at stock market. We have a chart of Nifty here. So as you have seen, the Nifty has kind of broken out of this area. So it has been in a bull phase for quite some time, and you can see the various inflows of foreign investors. I'm going to share that with you again. It has been on an uptrend. Now it has been a little bit of retracement, but because the crude oil is also up, from fundamental perspective, this is a kind of a bad news for us, because of which our market has corrected a little bit. So traders, as we have discussed, so our market has been correcting for quite some time now. This is primarily because again the crude oil has been going up, so this is bad news for our market, because of which currency so because of which currency has been down. Next we'll look at S&P 500. So again the same thing. So it tried to break out of this level, then it has again come down. Overall, I think it is okay, because if you see here, this is a up move, then it has corrected quite a bit, then again an up move. So this is just a correction. Market is still in a uptrend.
as soon as the Fed will start cutting the rate, we'll see a massive up move, and because of which you will see various investments, and our currency will get impact because of this. Currently, I think because of this move, you can see it's has been an impact on our currency because of the dollar is getting stronger. So let's see. Okay, so this is the chart for dollar index. If you go, so if you have seen the dollar has been on an uprise for quite a while. So traders, we are discussing dollar index. As I've told you, from July it tried to go down and break its support. Then it also went up. So currently the dollar index is also on an uptrend, which is also a cause for our currency to kind of broke off this level. As long as dollar index is bullish, so our currency will be bullish. So again, dollar index will be something to look upon for. Next on our analysis list will be, so we have covered S&P, we have covered Nifty. Let's look at Brent oil, because again, oil is a very key component for our market as well as for a global market, as long as the oil is in an uptrend, so it is bad for everyone in the global economy. So you have seen the Brent oil trying to go up. It was in an uptrend after COVID. It tried to came down, then it took couple of support at this level again. It was in a downtrend for quite a while, but after this it has taken a support at this level and then again tried to go up. So again, as long as the dollar index is up, crude oil is up, our currency is in a bullish stance. So looking at all those various fundamentals, you can see globally. So the it's a lot of pressure on our currency. That is why you do see a lot of these up move. So I do think the crude oil may go up or even consolidate. So it is good enough, like for us, like as long as that is the case, it will USDNR will remain on a bullish end and it will continue to go up. After that we can look at, let's see, okay, so we can look at India 2 year and 10-year yield. Again, bonds are really very important. So it is a second largest market after currency and before commodity. So commodity like gold and crude oil. So crude oil is very important to look at. After that, we have a 2 year bond. So obviously the 2 year bond have been in uprise after COVID because RBI has been increasing interest rate for quite a while. So it is 7.1, and which is still reasonably well. But if you look at a 2 year yield, so we are currently looking at that. So this one is an uptrend, but if you really want to, you can compare it to the US 2 year yield, which has again been an uptrend, but it's quite a bullish trend. Again, because I think people do expect Fed to keep on increasing interest rate because of inflation. So you can see, right? So here you can see this big drop in 2 year bond yield. 10-year bond yield, you don't need to look at 10-year bond yield because within 10 years I think the inflation problem can be resolved, so there's no need to look at that. 2 year one can give you a pretty good picture because if you see the up move, it's such a drastic move as compared to our bond yield, which is like a very slow move because it wasn't like that much increase in a movement, but it was like from zero point 0.5 basis to almost across 5. So like like 10 times I think it has increased. That's a very dramatic move, which is again the cause. So you can see again the bond yield is trying to go up, so people are predicting the interest rate to go up, which can again cause a lot of problem for our currency. So again, I'm very bullish on that as long as all of these factors are indicating to a very large up move in our currency. Okay, so we have looked at that. Again, we have looked at dollar index. We will look at other global economies. You can look at Euro INR, which is pretty much, if you look at Euro USD, I think you will get a pretty good picture of Euro INR because mostly we
trade with the US dollar, so euro is not much of a problem. You can look at a euro INR, but it doesn't give you a very broad picture. Euro USD on the other hand can give you a very good picture. So this is the chart of a euro USD. You can see the it try to go down again, same thing. So it has kind of broken down this support level of 2015. So this was a really bad time, but again it has kind of recovered. But so it tried to go up, which was good enough for euro, again for our currency as well, because dollar was getting weak. But again, what dollar index has done after that, it has just came down quite dramatically. So this is again one of the data points which does support bullishness of dollars again for 2 year, and for US bond 2 year and Indian bond 2 year yield. Again, the same story. If you look at the 10-year bond yield, you can face the similar situation here. After that, I think there for other economies as well. You can see, as long as the dollar index is like going up, other currencies again will be devalued, so there will be a lot of problem again. Another data point you can look at it, USD CNH. I like to look at that because China is the second largest economy again. So any problem there on Chinese yuan is anyway a very big problem globally. As you can see, again, so this was in an up move for quite a while, which was like US dollar was getting very strong, and then again it tried to go down, so because the Chinese economy got open after COVID again, and then this was an up move up in that. So again, this is again hovering around this level. I think if this will move up, that means the US dollar is again getting very strong, especially if it is getting strong again Chinese yuan, then like our currency is in a lot of trouble, because of which you can see a lot of devaluation again in our currency. This is again a very big problem. These all data points again indicate to a very strong up move in our currency. And so yeah, I think we have covered all of these fundamental data points, again from the stock market, various stock markets you can also look at, but they all give you a very big reason, whether you look at stock market, bond market, commodity markets, or even various currencies. So you do see a very big move in our currency. I do see it going above 83.5 and even above. Just waiting for a next year. As long as it is in an uptrend, we can keep on adding to our position. And yeah, so this is all for that. Next, we can look at an option chain to make our theory more concrete. Yeah. Just a second. So, guys, as we are discussing, so this is the option chain. As you can see in this option chain, uh, yeah. So for the next week, which is for a 25th of August, the expiry. So a lot of put writing you can see right here. So these are the OI chains. So there are a lot of OI chains. You can see 3.5 here, 2, 1.4. But on the other hand, if you do look at the call writing, so there hasn't been a lot of call writing as compared to put writing. So that do indicate that there is a lot of bullishness in the market. And also, if you look at the PCR ratio for this week, which can be 0.95, I mean, it can be a little bit bearish, but still, like, because if you see, there can be a lot of changes to various positions. Because this position just developed recently on a Friday. That is why you can see the low PCR. But I think in the next week, you can see a lot of changes happening in the PCR. The total max min is 83. Again, I think people, because if you do see, 83.25 has the max call writing, and 83 has the maximum of a put writing. Because if you do see, people are expecting it to hover between 83 and 83.25, between this and this level. If you go a little bit lower, you can see that. So this is the area and this is the area. So between this area, people are expecting again same thing, because 83 is anyway the main resistance area. I think we have drawn it before.
if you look at that, okay, so this was before, remove that. Okay, so you can see the 83, the same thing which I told you. People expected to take a support in here, but they do expect it to hover around this area. They don't expect a very large move. Again, no one can predict if the next large move will come next week or a day after that. uh, no one can tell you that. But it is still in a uptrend, so it is bullish. So as long as the story holds, we can again take that position. Yeah, so other than that, if you look at the VIX is also very nice. I think you can get good premium on both the call and the put side, but I would not go for a call because you don't know when the big move will come. Then you have to cover for your positions. Uh, and also, if you look at open interest, yeah, so you can look at an open interest for thing. Okay, so see, it gives us for that. Nope. No option change for USDNR. I don't think it does give us that. You can look at FII or DII data and sensible again. So this is for the Nifty index. But again, the same thing. Even in the Nifty, if FII are bullish, that if there is a net outflow from FII side, then I think it is a good enough for our story, as the currency will remain bullish and it will go up. So as long as there's an outflow, and the same thing, you can see a lot of call writing against the pot because people do expect markets to go down. Again, the FII, you can see a lot of people. Yeah. So how many calls and futures, and what is a cash outflow? You can see the cash outflow, right? So look at these numbers: 3,000 crore, 23 crore, 1,500. So the net outflow is really large from the FII side. For the next 2 weeks, it has been like massive net outflows. Again, this is very much again true to our story. As long as this is a, like, I can expect very huge quantity by FII selling. That is why you do see a lot of call writing on stock market, and which is again very good for our current view. Other than that, okay, so again, same thing, you open. And so these are the open position that I currently have. The same story from the Friday, which I was discussing. So these are all the puts that I have taken. I have shorted those. Again, the same story. I do expect it to go down. Not sure if it will go next week. It can like zoom up to from the next week. I can draw it for you guys. If it can zoom up on a next, like can directly go from here to here, like, or it can like consolidate for the next week one, and then maybe it can go up. Like, people are expecting, they don't expect 83 this level to breach. Again, I'm bullish, so I'm not sure if this will be broken out or not. Anyway, we can get a premium as long as if it goes up, we can add more to that. If it keeps hovering around, maybe if we get an opportunity intraday, we can add little bit of position. But currently we are at a profit of 150. So the story is pretty much intact, and yeah, so that is it from the option side. Okay, traders. So next is for people who prefer to listen to this in Hindi. So I'll switch to Hindi for the next part. So अभी हम बात कर रहे थे ट्रेडर्स की। आप FII और DII का डेटा देख सकते हो, उसके हिसाब से आपने देखा है कि काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है अगेन निफ्टी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर मार्केट, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, विच इज़ अ बैड थिंग अगेन। अगर आप यहाँ पे FII का डेटा देखो कैश में, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिक्री करी है। 2,000 करोड़, 3,700, 1,800 करोड़। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है FII के द्वारा। तो विच इज़ अ बैड थिंग। अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम बुलिश हैं।
यहाँ पे अगेंस्ट द करेंसी। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो दिस अ गुड थिंग, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी ज़्यादा डिवैल्यू हो सकती है, और अगर हमने पुट राइटिंग करी है तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली काफ़ी बुलिश हैं इसके ऊपर। अगर मार्केट नीचे जाएगा और काफ़ी एफआईआई सेलिंग होगी तो अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे मार्केट के लिए। सेम चीज़ जो है आप ऑप्शन चेन के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन चेन, अगर आप यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन चेन देखो, सेम थिंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिस इस वीक के लिए हम 25th ऑफ एक्सपायरी के लिए देख रहे हैं। आप देख सकते हो एट द मनी कॉल 3.1, सो विक्स भी काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम भी मिल रहा है। और यहाँ पे आप 83 पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कैन गो अप, एंड ऑल्सो आप कॉल राइटिंग भी देख सकते हो। इसका मतलब है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 83 के ऊपर रहेगा और 83.25 के नीचे रहेगा, सो इसी रेंज के अंदर रहेगा, और ये काफ़ी सिमिलर है। इसी के हिसाब से अगर आप यहाँ देखो तो 83 के ऊपर और 83.25 के नीचे, एज लॉन्ग एज कि वो इसी रीजन के अंदर है, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश होगा, और इसके हिसाब से हम अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। ऑप्शन चेन ऑब्वियसली आपको यही बता रहा है। पीसीआर थोड़ा-सा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि 0.95 दिखा रहा है। 0.95 ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। लाइक मोस्टली ये राइट हुआ फ्राइडे को, तो क्योंकि ये नंबर चेंज हो सकता है 0.95 से, और ज़्यादा अगर बुलिश मूव आएगा तो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंज होके एक बड़ा नंबर हो जाए, लाइक ज़्यादा पुट राइटिंग हो जाए इसके अगेंस्ट। अदर देन दैट अगर इसी के बीच में भी रहेगा तब भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम वैसे भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। इंट्राडे थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी हो सकती है इस रीजन के अंदर, बट फ्रॉम वीकली पर्सपेक्टिव मुझे अभी भी लगता है ये ऊपर जाने की पोजीशन पे है। सेम थिंग, हमने अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग कर रखी है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 400 पोजीशन, 120 एंड 10, अगेन हम काफ़ी बुलिश हैं इसके ऊपर, तो यही अपने पोजीशन यहाँ पे ले रखी हैं। इसी के अलावा आप यहाँ पे बाकी सारी पहले चार्ट देख लेते हैं यूएसडी का। पहले डिस्कस किया गया है, तो ये है रेजिस्टेंस, एंड पहले मैं बेरिश था पिछले वीक तो, बट मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया इस कैंडल के बाद। इसके बाद हम क्वाइट बुलिश हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो 1 साल का उसने जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो यहाँ पे तोड़ा है, और 1 साल के बाद ये एरिया टूटा है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा और बुलिश मूव के साथ आया। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कैंडल है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अप ट्रेंड में है, काफ़ी टाइम से आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और उसके बाद ये फाइनली एक बहुत ही अच्छे मूव से ऊपर गया। और हर साल लॉन्ग टर्म में हमारे करेंसी ऑब्वियसली 3 से 4% डेप्रिशिएट करती है। यही अगर आप मंथली ट्रेंड देखो तो हमेशा अपनी करेंसी हमेशा डेप्रिशिएट करती है 3 से 4%, और उसने फाइनली वो एरिया ब्रेक कर दिया है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो तो सेम थिंग यहाँ पे, क्योंकि इसने ये ब्रेक किया है और ये रिट्रेस मारने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ये बस एक पुल बैक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छे से ये कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बायर की प्रेजेंस है अगेन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है और अब ये काइंड ऑफ सपोर्ट बन चुका है। तो एज लॉन्ग एज ये इस एरिया को नहीं तोड़ता, हम बुलिश हैं इसके ऊपर, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसी के हिसाब से अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो, अगर इसको आप एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ तो बहुत ही अच्छा बुल मूव आप यहाँ पे कैंडल्स भी देख सकते हो, काफ़ी बुलिश कैंडल्स हैं। यहाँ पे ऊपर जाके इसने ये वाला एरिया तोड़ा, और अब ये यहाँ से यहाँ ये अब फिलहाल यहाँ पे है, बट चांसेस बहुत हाई हैं कि ये ऊपर जा सकता है। आई एम श्योर नहीं है कि ये इसी हफ्ते बहुत बड़ा मूव देगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बट क्योंकि ऑप्शन चेन में भी आपने देखा कि ये काफ़ी लोग यहाँ पे पुट राइटिंग करके बैठे हैं, तो ऑब्वियसली लोग काफ़ी बुलिश हैं। एंड देन बिकॉज ऑफ विच हमें पता नहीं है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा, या मे बी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर ये तेज़ी से नीचे है। एनीवे अगर ये तेज़ी से नीचे आया ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज हम काफ़ी बुलिश हैं। और अगर ये काफ़ी ऊपर जाता है कंसोलिडेट करने के बाद, ऑब्वियसली हम अपनी पोजीशन में और ऐड करेंगे, क्योंकि विनर्स में ऐड करो और लूजर्स को जल्दी कट डाउन करो। दैट इज़ द ओनली वे टू मेक एनीथिंग इन द मार्केट। आपने देखा कि ये अप ट्रेंड में था और फिर इसने कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पे आया नीचे, एंड देन अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी बार उसने टेस्ट किया, एंड देन फाइनली ऊपर गया। तो दिस इज अगेन क्वाइट इन अ बुलिश मूव, एटलीस्ट चार्ट्स में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है। फंडामेंटली अगेन बिकॉज आई थिंक अगर आप यहाँ पे भी देखो फेड की भी एक मीटिंग हुई है, उन्होंने भी मीटिंग मिनट्स में यही कहा है कि
क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी नीचे नहीं आए हैं, तो इन्फ्लेशन अभी भी नीचे नहीं आया है, तो मे बी कुछ और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। दैट इज़ येट टू बी सीन, बट अगर आप बाकी डेटा पॉइंट्स को देखो, सभी इसी लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं। सेम थिंग अगर आप निफ्टी को देखो, अपने मार्केट को, तो आप वेरियस एस्पेक्ट देख सकते हो यहाँ पे। ये हैं काफ़ी जो यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हमने सारे स्टॉक मार्केट्स को ऐड किया, वर्ल्ड के मेजर स्टॉक मार्केट्स को। हमारे निफ्टी है, एफ British stock market, and then German, then French, then this is US, और ये शंघाई और हैंगसेंग, अगेन चाइनीज मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप क्रूड ऑयल देख सकते हो, आप ब्रेंट ऑयल देख सकते हो, आप गोल्ड की पोजीशन देख सकते हो। अगेन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और गोल्ड कमोडिटीज है, मेजर कमोडिटीज, उनकी पोजीशन ऑब्वियसली हमें बहुत इंपैक्ट करेगी। ब्रेंट ऑयल ऑब्वियसली अभी 84 के अराउंड है, सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग हमारे लिए। लाइक एज अ इकोनॉमी हमारे लिए बैड थिंग है, बट फॉर आवर पोजीशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एज लॉन्ग एज ये अप ट्रेंड में रहेगा, ऑब्वियसली हमारे मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज क्रूड जब भी अप ट्रेंड में जाता है हमारी मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसी का आप रीज़न देख सकते हो कि क्रूड काफ़ी 120 टच किया था, तो बहुत लाइक मेजर इम्पैक्ट पड़ा था हमारी करेंसी का। तभी आप देख सकते हो काफ़ी बुलिश है हमारी करेंसी। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ब्रेंट ऑयल जो है बहुत ज़्यादा अप मूव में था बहुत टाइम से, और उसके बाद ये फाइनली यहाँ पे आया, रिट्रेस मारा, एंड देन इट ट्राई टू गो अप, और यहीं पे ही किसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया, और अभी अब मूव में है। अब पता नहीं है अब ये नेक्स्ट वीक में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अभी के लिए ये रिट्रेसमेंट के बाद ये काफ़ी बुलिश मूव आया है इसके अंदर, यही एक मेजर रीज़न है। हमारी करेंसी पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। और इसी के बाद आप देख सकते हो हमारा स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप देखो तो अगेन मार्केट काफ़ी बुलिश मूव में था, इसने काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस तोड़े हैं। ये अप मूव में था, बट अगेन क्योंकि ये काफ़ी 1-2 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये बस एक रिट्रेसमेंट ही है, बट अगेन ये अप मूव में जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। बट क्योंकि आपने एफआईआई सेलिंग और वो सब देखा ही है, और काफ़ी ग्लोबल करेंसी में काफ़ी इम्पैक्ट है, तो हमारा मार्केट अगर इतनी एफआईआई सेलिंग होगी, अगेन हमारा मार्केट नीचे जाएगा, तो हमारी करेंसी पे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। उसी के हिसाब से आपने ब्रेंट ऑयल देखा, आपने हमारा मार्केट देखा, आप S&P 500 को भी देख सकते हो। अगेन अगर क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट उन्हीं यूएस का ही है, और एज लॉन्ग एज S&P 500 के अंदर मूव्स, बेरिश मूव्स आएंगे, ऐसे आप देख सकते हो कि S&P 500 के अंदर बहुत अच्छा डाउन मूव आया है, और इसका मतलब है इन्वेस्टर्स आर काफ़ी स्केयर्ड है। उसकी उसका फ़ायदा अगेन हमारी करेंसी को मिलेगा, क्योंकि हमारे अप मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ मार्केट दुनिया के सारे अगर डाउन ट्रेंड में रहेंगे, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर करेंसी। उसी के बाद आप जो है ब्रेंट ऑयल हमने देख लिया है, आप 2 ईयर और 10 ईयर यील्ड देख सकते हो, आप डॉलर इंडेक्स को देख सकते हो। आपको मेजरली 2 ईयर और इंडिया और यूएस के 2 ईयर को कंपेयर करना है, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि अ, दोनों के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या सिचुएशन है। बॉन्ड यील्ड आपको काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन बता सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने यहाँ पे नीचे सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी, देन बहुत ही बड़ा और अच्छा अप मूव। एज लॉन्ग एज ये बहुत ही अगले हफ्ते हम शायद इस एरिया को बहुत आराम से तोड़ते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे करेंसी में बहुत बड़ा एक अप मूव आने की संभावना है, अगर डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग रहा, क्योंकि बाकी करेंसीज के अगेंस्ट अगर डॉलर इंडेक्स सब एरियाज को तोड़ेगा, तो हमारी करेंसी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इंडिया की 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड आप देख सकते हो, उसमें और यूएस की 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आया है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बढ़े हैं जितने यूएस के बढ़े हैं। उसका एक मेजर इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा अप मूव आया है यहाँ से डाउन से, एंड वो ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पे अगेन सपोर्ट, और अभी तो ये यहाँ पे है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन का डेटा भी थोड़ा-सा खराब आया है इस वीक का। आगे वाले डेटा जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करके बताऊँगा। अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी-सी खराब है। अगेन आप देख सकते हो क्योंकि यूएस का डॉलर के हिसाब से आप सिचुएशन देख सकते हो।
क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड में बहुत अच्छा गिरावट आई थी यहाँ पे, बट ये अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वैसे भी यूएस फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, और अपने मार्केट जो हैं आरबीआई वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है, अभी भी होल्ड पे है। उसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉन्ड मार्केट में। इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से हमारे जो बॉन्ड यील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन उसके बेस इसके कंपैरेटिव में यूएस का बॉन्ड यील्ड में बहुत अच्छा मूव आया, 0.5 से 5 तक, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का मूव अपने मार्केट में। इतना अच्छा बॉन्ड का मूव नहीं आया। उसकी एक उसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि वो ऊपर जा सकता है। और तीसरी चीज़, आप डॉलर इंडेक्स देख लिया, आपने ये सब चीज़ें देख ली, बाकी करेंसीज भी आपने देख ली। अगेन इन सब के बाद एक ही लाइक सॉल्यूशन निकल के आता है कि अपने मार्केट पे, स्पेशली करेंसी मार्केट पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। देखते हैं इसके लिए क्या पोजीशन होगी, और उसी के लिए हमने यहाँ पे पोजीशन ली है। थोड़ा और ऊपर अगर ये मार्केट जाता है तो हम ऐड करेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आने वाले हफ्ते में। So yeah, thank you for watching. Do like, share, and subscribe. Yeah, thank you.